Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Samra Shahid from BS Accounting and Finance, 5th semester. Today we are conducting live session about engineering ethics with my group member Hafsa Sajid and Mahnur Akram. Let's move toward our live session with the Head of Department of Electrical Engineering, Dr. Qasim Awais. Sir, kindly introduce yourself, please. Thank you very much for inviting me for and creating an opportunity to discuss about this very important and sensitive matter. So I am Dr. Qasim Awais. I am heading a electrical engineering department at Gift University. So basically, I have talking about my education and experience. I have been working in UCP, University of Central Punjab, Lahore, as electrical engineering lecturer, and later on I have been working as a head of department electrical engineering in CCET, campus of UET Lahore, and prior to that I have done my uh, PhD from Chongqing University, China, MSc from UK in networking, part of electrical engineering, and BSc from UET Texla. So apart from these, I have been actively engaged in research and development. One patent and multiple research publication are associated by my name. So please go ahead if you have any question related to this topic, engineering ethics, or any you want to discuss any details. Okay. Okay, then we will move toward a questionnaire. So basically, what is engineering ethics? Yeah, in this frame of reference, ethics basically we can divide or we can disintegrate into two parts. One is basically ethics. Ethics is involved in every field, every project, every field of life. Even in our daily life, ethics is a must part. Apart from that, engineering ethics is basically a behavior or social responsibility of engineers that they are obliged to fulfill for their society, for their environment, and for their professional. And they have to carry out, the practices that are according to standards, and they have to carry out the duty hours and problems analysis and experiments according to details and ethics which have been guided, and SOPs, standard operating procedures, have been developed for most of the projects and problems. So basically, summarizing it, it is about moral obligation and social obligation and environmental obligation of engineers toward the society or generally humanity is called engineering ethics is basically related to engineering ethics. Noted. So basically, engineering ethics are the professionalisms of engineers. Yeah, there is one basically a course which is taught especially in the undergraduate of electrical engineering in most university, not all university, but in most university there is a one special course that's named, that is called engineering ethics. In that course, there are outcomes that are obviously defined, that engineer have to study certain standard, engineer have to be complied with the certain parameters and certain laws that they have to carry on. Just for example, I want to mention one example, like somebody has a project related like generation, power generation, like it's solar power generation or wind power generation. So whenever we have to do sustainability or survey, we have to do a feasibility survey. So in that we have to take care all the parameters, technical parameters. Apart from that, you have to take care, or you have to basically consider the environmental parameters. Like there's no danger for building this project of, like, let's say, wind farm. So if we develop a certain size of wind farm in certain location, that its impact on the animal, and its impact on the environment, its impact on the soil, each and every detail, and there are certain requirements and standard need to be met. Another example we can take, like when they China created a dam, like it's called the world's largest or biggest dam. It's called the Three Gorges Dam.
They say that when they build this dam, this is so huge dam that it can fulfill even the whole Pakistan electricity requirement, and even after that, its electricity generation will surpass the requirement. So it's so big and so immense in structure and size. So yeah, talking about this Three Gorges Dam, obviously its size is so huge that its water flow and its reservoir have a huge impact on the natural life, natural environment, plantation, even fish in that reservoir or other element. Hundreds and thousands of species are getting affected by that reservoir. So they have to carry out all the you know. studies or surveys or physical feasibility that if the water quality is even stored for that much time and how much flow is needed to sustain that standard or natural life of those fish or other species. So these kind of I think these two examples should clear the map for ethics related to any engineering project, especially power generation related problem, because dam are the most cheap source of power generation. Apart from that, coal and other sources are obviously everybody knows that they are expensive and difficult, and they produce lot of coal, like coal power plants. They produce lot of pollution related to environment. Even America and certain countries have get together. They have like 2030 milestone to meet up the this air temperature, yeah, you can say the world temperature problem, greenhouse problem, greenhouse effect basically. If we talk about greenhouse effect, does anybody of know, you have any awareness about the greenhouse effect, or the earth is getting hotter and hotter day by day? No, sir, I don't have awareness about this. Kindly explain me if you have. Yeah, no, I would just like to define it because we all of us must have seen the vegetables growing under the plastic cover in the fields. Usually when Yes, you of travel. course. So basically, that's a simple kind of greenhouse. What happens in greenhouse effect in the when we talk about the world as a whole scenario? All the gases or pollution or the whatever comes out of the chimneys of industry, those gases compile up in the atmosphere, and the sun rays are trapped. Sun energy, heat energy is trapped inside the world atmosphere. So eventually, Yes, yes. temperature of this whole world, our Earth, is getting higher, and glaciers are melting, and all the atrocities and hurricanes and storms and snowstorms, even drought is coming in most part of the world. This is a basically a problem, ethical major ethical issue, a major ethical dilemma that is happening these days. We cannot predict that after 20-30 years what will happen to the world due to this immense issue. Lot of countries, even most of us in our daily life, we can see that when we were in our childhood, we never used to see this kind of dust and this kind of smog and pollution in the environment. But no, due to this smoke, we see that there are a lot of diseases and problems. Basically, this problem of global warming or pollution problem is directly related to the engineering ethics. Because if engineering ethics is followed completely or in true spirit, so that would not happen, because especially in the developing countries, industry is not developed or not started with all the SOPs, all the requirements that are meant to be followed. So even due to corruption and other problems, those SOPs are ignored. And the most common example is like bricks company, which are just scattered all around our country, that provide the bricks for our home that we build. So smoke coming out of those chimneys basically need to be treated, filtered out. The clear, without any pollution, the smoke should be coming out. But nobody, most of the people do not follow the the SOPs or standards that need to be followed.
So basically, engineering ethics is mandatory, and engineering ethics is the core issue, especially in engineering projects, especially in our industrial projects or all the industry-related issues. Summarizing your question, I would say that we need to, you know, follow the standards, follow the guidelines which have been laid out, and we need to be very careful in our daily life even. So we should conserve light and conserve electricity, because this electricity comes from the industry that generates pollution and smoke and greenhouse effects, basically. Okay, got it. So, sir, what NIEE stand for? It's not directly related to our curriculum, but as far as I know, NIEE stands for National Institute of Ethical, Behavior, Ethical Standards. So basically, this institute governs and makes the standard that are directly related to engineering and other fields that directly impact the environment, that directly impact our lives, daily lives. So this institute is mainly responsible, National Institute for Engineering Ethics. But apart from that, there are other bodies that are also responsible for making standard, especially in electrical engineering. There is one famous standard that's called IEEE standard, and the other one is like ISO standard, International Standard Organization. They basically define the minimum requirement of certain projects, or certain limitations of certain projects. So these projects, like we see that as in most of the projects, companies, it's mentioned that it's ISO 2000 certified, ISO 2010 certified, and so on. Basically, those certification are required. Those have basic requirement like health and safety requirement, like their working environment is safe for their employees. Whatever the products they make, those products are safe for the users, which are using those products, and they are not harmful for the environment. Basically, those standards define those nitty and gritty of those details and processes. So basically, yeah, I would summarize NIEEE stands for National Institute of Ethical, Engineering or Ethical Standards, Engineering Ethics, National Institute for Engineering Ethics. Okay. So, sir, can you explain why ethics is important for professional engineers? I think you have explained it, but can you explain it again? Yeah, in this frame of reference, we can say that efficacy of or benefiction of engineering ethics is critical and prime importance especially in all engineers, especially electrical engineering. If I talk about ethics, if a certain engineer does not follow the ethics or standard of let's say wiring, or some engineer is doing the wiring in any industry or any building, large warehouse. So if he does not follow the certain standard or certain safety precautions or health and safety rules and standards, so he maybe get getting lost his life, or his own life, because electricity is very dangerous commodity. You cannot play with it. You have to deal with very care and very precautions. So, if a generalized standard is that when you touch the live wire, you have to be insulated. You wear a specialized suits. You wear a specialized gloves, and they have certain resistivity, and they have certain material thickness. They have certain fabrics that are resistant to the conductivity of electricity, or uh, conductance or capacitive effect are reduced with that material.
So talking about that, so certain gloves, helmet, even physical clothing is required. If you talk about certain voltages, if I say you are handling a 4 kV line, 4000-volt line, so you have to be at certain distance before you touch or repair that line. You have to disconnect the mains, before touching those lines, or before repairing or installing any system, supporting system. So basically, engineering ethics, especially in I say wiring, let's say, is just one example. We can talk about many millions of example of our daily life. Like if you follow the thickness of conductor that we are using, that need to be according to the standard. If we use a conductor, a wire conductor that has a less conductivity or less diameter, that would create losses. And at the end of the day, the whole company or whole building would be generating much more losses, and you will get much expensive electricity bill due to that conductive or cheap wiring that you installed. Or if you do not follow the proper diagrams or chart, building diagram, wiring chart, so you will lose, maybe there is a short circuit, maybe there is a the fuse which you are using, or the equipment which you are using is not according to the standard that have been laid out by engineering ethics program or engineering ethics standard. So that would harm your system, or all the appliances that are working on that system. Even that's might be hazard to the health and safety as well. So You can continue. yeah, you can ask question if you have any query, because I hope you are following what I am saying. If there is any, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इंजीनियर्स यस did- यस आई एम फॉलोइंग सर अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करूं कि इंजीनियरिंग एथिक्स की कुछ इज रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ एथिक्स के बारे में मतलब कि जो इंजीनियर्स होते हैं उनके इम्पोर्टेंस एथिक्स के लिहाज से कंपनीज में क्या होगी जो इंजीनियर्स कंपनीज में जॉब कर रहे हैं जी वो अगर आप उनके कुछ एथिक्स के पॉइंट्स जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। इसका अगर बात करें इंजीनियरिंग एथिक्स का, किसी कंपनी में जाना है तो देर आर certain ethical behaviors, I think responsibilities which a person need to be then they have to be punctual on their times. They whatever the company rules, they should be following those rules. Like if there is like in this, especially in COVID situation, if there is a SOP for health and safety, like you wear mask, you get some distance from the other person. So we basically need to follow those rules and principle that are defined by that most in most of organization people they have attendance system. Most of the people, they come and go in the like just for any company or any industry, they do not spend the required time in their working environment. So they need to be careful. In some industries, you are printing so much paper. Like, let's see, I receive multiple emails daily. So instead of using like a soft email system, they have a system that they need to print lot of paper every day and discard those paper. So that's again an ethical practice that we can adopt to reduce the environmental issues. Like other dressing code is generalized common sense. So a person should be hygiene, basically health and safety. If you talk about any industrial or any company or any university or any organization related ethics, so basically the SOPs or the the policies that have been laid out by the organization, engineer have to follow those policies, whether they are related to health and safety, whether they're related to punctuality, whether they are related to professionalism, whether they are related to the competence of the work they are doing. So they need to be uh,
competing, basically following the SOPs that have been laid out. Basic three, four dimensions which am familiar with, or we, every one of us understand, I have already laid out. जी. What are the responsibilities of engineers toward environment? Basically, as we already discussed, environment is our lifeline. If we have everybody apart from the engineering, ethics, every company, every department, every person, every organization, we have to all have to breathe in the air, the same air. We have all of us have to live in the same environment, same cities, all sharing same roads. We have to share same roads or infrastructure. So basically, talking about the engineering ethics, engineers' responsibility towards the environment. Basically, they have to create a project that will not only improve the air quality or environment of our environment, but also they help to reduce the smoke or problem that are faced by our daily life, that are faced in our daily life, especially for in making easy life. Like, I mean, the project should be initiated, the government should make a policy that basically improve the quality of life every individual. So engineers basic responsibility towards the environment include the projects that need to be laid out in the best interest of our environment, and the policy engineers should put their input, to provide the basically to the government, that government legislation can make policies like electric vehicle policy. Just for example, I want to talk about it. Like electric vehicles should be promoted in this time, because it's a need of our every country is subsidizing the tax on electric vehicles. So electric vehicles, import duties on electric vehicles are reduced in most of the country, but in Pakistan, we see that this almost non-to-existent electric vehicle trend is being visualized. All the cars, all the vehicle buses, even large transport is running on the fossil fuels. Basically, that generate the smoke, and obviously at the end of the day it causes the environmental problems. So one thing I must say, that Imran Khan, this government has initiated the billion tree project. They have planted everybody in our daily lives. They think that this billion tree tsunami is just, it has no effect, and it's money gone in waste. What it will have effect in our daily life. So basically, this is a long-term vision of this, I say, party or this government. It will affect our country. It will reduce the floods. It will improve the quality, air quality, and it will obviously improve the environment, overall environment of our country. So these kind of policies, these kind of projects should be initiated. The engineers need to put forward their suggestions. So how can we improve? There is an electric vehicle policy which has been I think approved in 2020. So that policy already has some discrepancies that need to be made and rectified. So basically, engineers or everybody in our society basically have basic requirement to the ethics, engineering ethics. So apart from environmental issues, there are sustainability issues. Basically, the engineer need to develop a system or prototypes that are sustainable, that do not need a constant repairing. Like, just I would like to suggest an example of solar electricity. Instead of using petrol, diesel, or other fuels to generate electricity, so such systems, such devices need to be devised that they generate their own electricity from solar electricity, because it's a green technology. It's it has initial cost, but after a long in the long run, it's beneficial, and it's beneficial to the environment. It's beneficial to the, obviously, our planet, and it reduces the overall cost of electricity generation.
So basically, these kind of technologies are, things need to be redefined and need to be implemented in whole, letter and spirit. सर आई हैव अ क्वेश्चन आई डोंट थिंक सो कि ये रिलेटेड है मतलब कि इंजीनियरिंग से के साथ लेकिन फिर भी आजकल एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है मतलब कि ह्यूमन लाइफ को और वैसे भी तो इसमें कोई इंजीनियर्स का कोई पार्ट या कोई इम्पोर्टेंट रोल वगैरह है जी बेसिकली ऑब्वियसली ये जो जितने आपके इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आया है तो इंजीनियर्स का डायरेक्टली रोल है इसमें कि जितना पोल्यूशन आपका बन रहा है वो कहाँ से पोल्यूशन आ रहा है एरोप्लेन से आपके मतलब एक टाइम में आप देखें तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एरोप्लेन इस वक्त राइट एट दिस मोमेंट आप कह लें कि 10 लाख या 20 लाख से ज्यादा एरोप्लेन हवा में उड़ रहे हैं इस वक्त और कंटिन्यूसली 24 घंटे ये चलता रहता है और ऑब्वियसली आप ट्रैफिक देखें सड़कों पे सिर्फ हमारे सिटी गुजरांवाला में लाहौर में देखें कोई ऐसा घंटा या टाइम नहीं होगा दिन में जब सड़क आपकी एम्प्टी मिलेगी ऑब्वियसली वो धुआं जनरेट कर रहे हैं एरोप्लेन चल रहे हैं आपकी इंडस्ट्री चल रही है तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है इंजीनियरिंग एथिक्स के और इंजीनियर ऐसे जो स्टैंडर्ड बनाए ऐसे रूल्स में ऐसी डिवाइसेस जनरेट करें तो बेसिकली जिससे एनवायरनमेंट आपका जो है वो इफेक्ट ना हो तो ये इंजीनियरिंग एथिक्स के डायरेक्टली रिलेटेड है और ऑब्वियसली इंजीनियरिंग एथिक्स ही इन्वॉल्व है इसमें अगर 20-30 साल पहले ये चीजें इंजीनियरिंग एथिक्स को इतना जोर से और इतना इम्पोर्टेंट समझा जाता तो आज ये इश्यूज ना होते अब जाके स्टडीज हो रही है रिसर्च हो रही है इन चीजों को रीवैल्यूएट किया जा रहा है कि अब 10 से 15 साल बाद क्या इफेक्ट होगा लाइफ कैसी होगी प्लांटेशन पे क्या इफेक्ट होगा ठीक है ह्यूमन की हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा इफेक्ट होगा तो ये सारी रिसर्च और स्टडीज अभी हो रही है ये अगर पहले हुई होती तो आज बहुत सारी बीमारियां जो निकल आई हैं वायरसेस निकल आया इम्यूनिटी लोगों की लो हो गई है तो वो ऑब्वियसली बेनिफिशियल होता तो तो सर आपको क्या लगता है कि अगर एयर पोल्यूशन कम करना हो तो इसमें सबसे ज्यादा रिसोर्सेस किस चीज की हमें जरूरत पड़ेगी लाइक किससे ये थोड़ा कम हो सकता है दो साइड है दो तीन इसकी डायमेंशन हो सकती है एक तो ये है कि आप पहले जो आगे सिस्टम बना रहे हैं इंडस्ट्री लगा रहे हैं उस वो पोल्यूशन फ्री या ग्रीन जो है इंडस्ट्री लगाएं या ग्रीन टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री लगाएं ठीक है एक चीज और दूसरा चीज ये है कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डिवाइस करें मतलब सिस्टम डिवाइस करें जो ऑलरेडी आपकी जो चल रहा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिप्लेस कर दे ग्रीन टेक्नोलॉजी से ठीक है ना अब चाइना में इतना जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ बीजिंग में इतना इशू पोल्यूशन का इन द रिसेंट ईयर्स कि वहां पे इतनी ज्यादा गाड़ियां होती 6-6 घंटे आपकी ट्रैफिक ब्लॉक रहती है और इवन लोगों को ये नाक के एलर्जी और कान की और बीमारियां और जो इवन बहुत सारे इश्यूज थे तो उन्होंने क्या किया बहुत बड़े बड़े टावर्स ना इंजीनियर ने डिजाइन किए वो टावर्स का क्या काम था इनटेक लेते थे जो डर्टी या पोल्यूटेड एयर है और उसमें सर्टन फिल्टर्स लगे होते हैं बेसिकली ना वो जिस तरह आपका फिल्टर का क्या काम होता है कि उसने जो एक इनपुट लेनी है एयर की उसको जो पोल्यूटेंट पार्टिकल्स जो हैं उनको रेक्टिफाई करके या उनको पोल्यूशन को जो स्मॉल माइक्रो पार्टिकल्स बेसिकली नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर की स्ट्रक्चर इस तरह डिजाइन होता है कार्बन नैनो ट्यूब से भी और इवन डिफरेंट टाइप के वो टेक्निकली स्पीकिंग वो स्ट्रक्चर होते हैं कि वो उनसे एयर पास करके वो पार्टिकल्स उनके अंदर स्टक हो जाते हैं और क्लीन और जो है जो इफेक्टिव जो फ्रेश एयर है वो आपकी आउट हो रही होती है तो जितनी 50-50 स्टोरी बिल्डिंग के 30-30 स्टोरी बिल्डिंग के उन्होंने वो स्ट्रक्चर बनाए और अपनी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को उन्होंने इम्प्रूव किया ठीक है जी और गाड़ियों के धुआं को उसमें उन्होंने इवन पोल्यूशन को इंडस्ट्री को ऑब्वियसली चाइना में जो आई थिंक 60% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थी वो पहले हो रही थी कोल बेस्ड कोयले से ठीक है कोयला ऑब्वियसली जब भी बर्न करता है धुआं निकलता है तो उन्होंने इंजीनियर्स ने इंजीनियरिंग ऑब्वियसली सिस्टम डिजाइन किए कि वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर जनरेशन है उसके शिफ्ट किया तो अभी ऑलमोस्ट उनकी आई थिंक मोर देन 80% जो पावर है 75% पावर है जो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक से या रिन्यूएबल से आ गई है दुनिया का सबसे बड़ा जो दुनिया का लार्जेस्ट जो सिटी है जो सोलर पावर का जनरेशन होती है ये पैनल बनाने वाला कंट्री चाइना है ठीक है जी अब दुनिया का सबसे बड़ा जो सोलर पावर का सिटी है पूरे के पूरे सिटी जो है वो सोलर पावर से चल रहे हैं
उसमें सोलर पावर के मतलब सन की लाइट आ रही है, आपको पता ही है पैनल के ऊपर वो सोलर पैनल होते हैं, उनके ऊपर इंसिडेंट होती है और ऑब्वियसली वहां से वो जनरेशन हो रही है। तो बिल्कुल जीरो एमिशन ग्रीन सिटीज उन्होंने क्रिएट कर दी हैं। ठीक है, इतनी ज्यादा उनकी मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, प्रोडक्शन है, तो विद इन डेज जो है अपनी पूरी की पूरी जो है रिवैम्प कर रहे हैं चीजें और उनको इम्प्रूव कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम चाइना, टॉकिंग अबाउट ट्रम्प आए थे, उन्होंने जो एनवायरमेंटल एक पॉलिसी थी G6 कंट्रीज का ना, वो विड्रॉ कर लिया था उसने। अभी जो बाइडन नए प्रेसिडेंट आए हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने उसको दोबारा पेरिस का जो उनका एग्रीमेंट उसको ज्वाइन बैक कर लिया है कि 2030 तक 2050 तक सर्टन गोल सेट किए हुए हैं जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज है इन वर्ल्ड की। तो मतलब बात करने का मकसद ये है कि पूरी दुनिया जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो ऑब्वियसली लेट्स से 10% या 15% पोल्यूशन में अपना हिस्सा डाल रही है। सिर्फ 6-7 मुल्क हैं जो बड़ी इकोनॉमीज है, लाइक चाइना है, अमेरिका है, ठीक है जी, आपका यूके है और कनाडा है, मतलब ये बहुत बड़ी इकोनॉमीज है, जापान है। तो वो गिने 10-12 मुल्क हैं या G20 कह लें, ठीक है, जो बड़ी इकोनॉमीज है, वो आपका 70 to 80% दुनिया का पोल्यूशन जो है वो सिर्फ 20 मुल्क जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं या उसमें टेक पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली उन्होंने अब टारगेट्स दोबारा आके रखे हैं कि इन्वायरमेंटल, तो ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल टारगेट्स हैं तो वो कौन अचीव करेगा? इंजीनियर्स अचीव करेंगे। इंजीनियर्स अचीव करेंगे तो उनके लिए कोई गाइडलाइन या कोई स्टैंडर्ड डिफाइन हुए पड़े हैं या हो रहे हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली किस डोमेन में आता है? इंजीनियरिंग एथिक्स की डोमेन में ही आता है। ठीक है ना जी? जी बिल्कुल। Okay, so what is the role of engineers towards sustainability, sir? जी, इट्स अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी बेसिकली क्या है कि आपका लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हो, सस्टेनेबल हो, उसको रिपेयरिंग की कॉस्ट ना हो, ऑब्वियसली उसमें इट्स पोल्यूशन फ्री हो, ऑब्वियसली इट्स रनिंग कॉस्ट इज अफोर्डेबल एंड इट्स नॉट getting a burden to any person or any society or any government. So those sustainable projects or sustainability basically engineer need to design or redesign the system that will have a profound effect on sustainability long term. Sustainability basically defines that anything that is has a long term effect or it has a long life, basically you can say. So it is sustainable, so it can run on longer time without any problems, you can say in a simple word. So sustainable projects basically डिजाइन करने में, अब let me just elaborate it by one example. If you have a certain like my professional or related reference related background is like power or electricity or electrical engineering, so I am quoting most of the example from this domain. So just let's talk from a generalized daily life our example. So if we let's say we built a bus service like metro bus service in Lahore, so that is built, okay, that is built, every person have to pay like 20 rupees a ticket, right? So let's say it's expensive, our expenditure is like 100 rupees per person, so 80 rupees is already funded by government from the government's pocket. So can we say that this is a sustainable project in the long term? I think so. I think so. I can disagree with your answer because you can government can subsidize certain projects, 1 2 3 projects. If every project is like subsidized by the government, so it's not sustainable, so all the debts will be accumulated on the government's account, so basically the project should be designed and run that like if its ticket is 20 rupees, the whole metro bus system should be sustainable, that it can cover its costs. If it cannot cover its cost, so it's not a sustainable project in the long term. Yeah, either you have to increase the cost of this ticket or the government funding need to be increased with the passage of time. So basically when you design a system, it should be sustainable.
When you like just to talk about the metro bus train metro train station, which I'm not sure whether I'm expert on this subject, but I have a certain opinion. It may be, anybody can disagree with it. But metro bus station, its ticket is like the commuting ticket is like 100 rupees, I think, or 120. So, but the actual cost of that single person might be 200, 150. So every project, every system that has to be sustained, that is sustainable if it covers its own expenditures, if it covers its own costs. So government do not have to pay from their pockets. So the project generates its own, funding. Another example I can say, like Gift University. So Gift University, all the students, there is important, effective input in the Gift University. Like about 7,000 students join the university. So all the electricity bills, all the teachers' wages or workers' wages are covered from that tuition fee. I would say anybody would say that this is a sustainable project. So if those costs, electricity bills or those facilities, all the facilities, the students, fee or the income of the university cannot, compete on those income. So we cannot say this is a sustainable project, right? So basically, sustainability engineers need to define basically standards or follow the projects or make the projects or design the projects that are sustainable in the longer run, basically. ओके नोटेड सो ये जो प्रोजेक्ट है इसका ट्रेन का तो ये सस्टेनेबिलिटी नहीं हो सकता क्योंकि ये अपनी कॉस्ट कवर नहीं करता ऑब्वियसली आपके जो है खर्चा ज्यादा है, आमदनी उससे कम हो रही है, तो क्या आप उसको कहोगे कि ये अच्छा सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है? नो जो सिंपल सी बात है, आपके घर का खर्चा है, लेट्स से मेरे घर का खर्चा है जी, मैं कहता हूँ 10 रुपए है या 10,000 है हर महीने का, इनकम मेरी है 5,000, तो बाकी 5,000 मैं कहीं से किसी से उधार ही पकड़ूंगा। या तो ये है कि मैं अपना खर्चा कम कर लूं, या ये है कि मैं अपनी इनकम बढ़ा लूं, तो तभी सस्टेनेबिलिटी होगी ना। जी बिल्कुल ओके सो और नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स जी, engineering standards, basically there are a lot of engineering standards, there are a lot of domains, and there are countable, I can say that engineering standard, like there are standards related to telecommunication, there are standards related to engineering. If you talk about engineering, there's a huge domain. We can talk about civil engineering, we can talk about electrical engineering, mechanical engineering, mechatronics engineering, chemical engineering. So engineering domain, engineering ethics is a very huge domain. So I am only talking about only a certain part of that engineering ethics. That's called like electrical engineering ethics, I would say. So if I talk about the electrical engineering related standards that are IEEE standard, basically that is called Institute of Electrical and Electronics Engineering, standards. Basically, these are widely accepted and implemented all around the world, and basically all around the organization. So other apart from that, there are ISO related standards. So those standards have certain, as I already said that health and safety, requirement, technical requirement. So those need to be followed, and those need to be met before somebody or some institute or some individual is accredited, from those standards. So basically, this organization is responsible for the generation and modification and the creation of those rules and certain SOPs, and certain tools are assigned for certain tasks and recommended for certain tasks. Certain practices are standard for certain task, and certain just for example, I would say that radio frequency, RF communication. So if you talk about RF communication, we say that there are certain standard like Wi-Fi. आपको पता है Wi-Fi जो हम यूज करते हैं उसकी क्या जो फ्रीक्वेंसी है?
आई जी हैव नो आइडिया, लेकिन उसकी से वाईफाई जो हम लोग यूज करते हैं मोस्टली, तो हम लोगों को उसकी स्पीड का इशू होता है। लाइक अगर तो उसकी स्पीड कम होगी तो हमें ज्यादा इशू होता है। दूसरा उसका जो इशू मोस्टली जो हमें पीटीसीएल में मिलता है वो तो यही है कि उसकी वायर आई थिंक कट हो जाती है। जी जी, बस वो वही बात है ना कि अगर आप इंटरनेशनली वो स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, ठीक है, वो बेसिकली स्टैंडर्ड क्या है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन है वाईफाई का वो 2.4 गीगाहर्ट्ज है, ठीक है। 5 गीगाहर्ट्ज पे न्यू स्टैंडर्ड आ रहा है, 5G आ रहा है ऑब्वियसली। 4G जो 2100 मेगाहर्ट्ज पे काम कर रहा है। तो स्टैंडर्ड हम बेसिकली क्यों बनाते हैं? स्टैंडर्ड हम इसलिए बनाते हैं कि लेट्स से मैं एक चीज है वो काम डिवाइस बनाई है, ठीक है, उसने कम्युनिकेट करना है पाकिस्तान में, ठीक है जी। तो वो काम करती है 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे। अब वही वो मोबाइल फोन है, मैं यूके चला जाता हूँ, कनाडा चला जाता हूँ, अमेरिका चला जाता हूँ, ठीक है। तो वहां पे जाके मुझे डिफरेंट मोबाइल फोन नहीं लेना पड़ता, वही सेम मोबाइल फोन पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट काम कर रहा होता है। ऐसे ही है ना? तो उसकी मेन वजह क्या है? तो वो कम्युनिकेशन के लिए एक खास जो स्टैंडर्ड है, वाईफाई का स्टैंडर्ड है, फ्रीक्वेंसी का स्टैंडर्ड है, वो फॉलो किया जाता है। अब हमारे यहाँ होता है कि आपने जो बात की या प्रॉब्लम की बात की कि स्पीड स्लो आती है या डिस्कनेक्शन हो जाता है, वो बेसिकली जो सर्टन स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो नहीं किए जाते। अब सर्टन स्टैंडर्ड क्या है कि एक जो काम रहते हैं ना जियोग्राफिकल लोकेशन में, तो वो कम्युनिकेशन में की लैंग्वेज में सर्टन सेल्स में डिवाइड किया होता है। अब कितने यूजर्स पर सेल है उसकी एक लिमिट है जो बाहर के मुल्कों में इंटरनेशनली फॉलो की जाती है। हर एक को बैंड विड्थ, बेसिकली स्पीड कितनी जो है मिनिमम स्पीड का क्राइटेरिया होना चाहिए। यहाँ पे एक सेल में पाकिस्तान में मे बी 1000 यूजर्स हो, ठीक है। अभी वही बैंडविड्थ या वही स्पीड जो है बाहर के, अब यूके में मैं यूज करता रहा हूँ, वहां पे डाउनलोड करने का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। आई हैव बीन इन यूके ऑलमोस्ट 5 इयर्स। मैं फ्रांस भी गया, इटली भी गया, टाइम मेरा चाइना में भी 3 साल गुजरा। तो उन कंट्रीज में, एडवांस कंट्रीज हम उसको कहते हैं, डेवलप कंट्रीज कहते हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि वहां पे जो वायरलेस जो यूज हो रही है या जो फैसिलिटीज यूज हो रही है या गैजेट्स यूज हो रहे हैं या लाइफ को इतना इजी कर दिया उन्होंने, तो ऑटोमेट कर दिए चीजों को कि वो आपको स्पीड का कोई इशू है ही नहीं। आपकी लेट से कोई 100 GB की भी फाइल है, वो विद इन 1 मिनट जो है डाउनलोड करके आपके डेस्कटॉप पे आपके सामने होगी। यहाँ पे पाकिस्तान में 100 GB की फाइल है, वो डाउनलोड करनी पड़ेगी तो मुझे मे बी 2 वीक लग जाए, मे बी 1 वीक लग जाए। अच्छा कनेक्शन होगा तो मे बी एक दिन में हो जाए, ठीक है ना? इस तरह है ना। तो वो वहां पे डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप मूवीज है 4K 8K अच्छी से अच्छी पिक्चर क्वालिटी की आप लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई अटकती नहीं, कोई आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस, जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम लोग जैसे आपस में वो एक ऑनलाइन मीटिंग टाइप कर रहे हैं, तो किसी की कोई आवाज स्टक नहीं होगी। आपके जो वीडियो है सारे हंड्रेड्स ऑफ पार्टिसिपेंट भी हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उसकी वजह क्या है पीछे कि आप जो है वो इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड जो है ना उन्होंने, लेट से स्टैंडर्ड ये है कि जी एक सेल में जो है 50 यूजर हो, ठीक है। जो मैं भी हूँ, मेरे नेबर्स भी हैं, सो ऑन सो फोर्थ जो है वो 50 यूजर हो। यहाँ पे क्या होता है कि वो पैसों की बचत करने के लिए या अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव टाइम के साथ साथ नहीं किया जाता। और लेट से एक सेल के अंदर 150 की बजाय 500 यूजर होते हैं, 700 यूजर होते हैं, 800 यूजर। आपने नोट किया होगा कि बेसिकली ये ना जो आपकी बैंडविड्थ आ रही होती है, स्पीड आ रही होती है टेलीकम्युनिकेशन की, ये डिवाइड होके आ रही थी। जब आप बात करते हैं ना 8 मेगा बिट्स पर सेकंड का आपका कनेक्शन है, तो 8 मेगा बिट्स पर सेकंड तो इतनी स्पीड है कि एक बंदे को मिल जाए तो वो तो मिनटों में, चुटकियों में आप जितना मर्जी डाउनलोड करें। वो 8 MB बेसिकली 100 या 10 या 20 30 लोगों में शेयर होके आ रही होती है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड्स को, इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स को फुल्ली कंप्रीहेंड नहीं किया जाता, फॉलो नहीं किया। Thank you, sir. Can you please explain code of ethics for engineers? The code of ethics, I have a generalized view about it. कि कोड ऑफ एथिक्स ये है कि इंजीनियर्स का ऑब्वियसली जिस तरह एक डॉक्टर्स का एक ओथ लिया जाता है जब भी कोई मेडिकल का स्टूडेंट है, करता है मेडिकल, तो उसके एक लिया कि मैं ह्यूमैनिटी को सर्व करूंगा, कि ऑब्वियसली किसी को लाइफ डेंजर में होगी तो ऑब्वियसली मैं उसकी हेल्प करूंगा। इसी तरह इंजीनियरिंग का भी है कि आपको एक एथिक्स का ऑब्वियसली ट्रेनिंग दी जाती है,
कोर्स ऑब्वियसली इंजीनियरिंग एथिक्स के रिलेटेड जो है स्टडी कराए जाते हैं। आपको जो इम्प्लीमेंटेशन जो है आउटकम बेस्ड एजुकेशन है वो इम्प्लीमेंट कराई जाती है। तो उनका कोड ऑफ एथिक्स यही है कि बेसिकली जो है फिजिकल के रिलेटेड, हाइजीन के रिलेटेड वो ख्याल करें। ऑब्वियसली प्रोफेशनलिज्म के रिलेटेड आ जाता है, जो आपके कॉम्पिटेंसीज हैं या एसओपीज हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड या आरएफ के रिलेटेड या कम्युनिकेशन के रिलेटेड या नेटवर्किंग के रिलेटेड। ऑब्वियसली जो इंस्ट्रूमेंट जो आपने इक्विपमेंट इंस्टॉल करना है वो अप टू द मार्क हो, अप टू द स्टैंडर्ड हो। ऑब्वियसली जो आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जो आपने किसी का ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आप उनको जो है एथिक्स को, ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स जो है उसको फॉलो करें, कॉम्पिटेंट जो है बिहेवियर रखें ऑब्वियसली। तो ये बेसिक जो चीजें हैं प्रोफेशनलिज्म के रिलेटेड, ये ऑब्वियसली एवरी जो ग्रेजुएट है उसको टॉट की जाती हैं। इन्वायरमेंट के रिलेटेड है, सस्टेनेबिलिटी के रिलेटेड जो चीजें हैं, obviously these courses, 2 3 courses are already in curriculum, and their contents and course outlines are almost being updated on continuously. All right, sir. Alright. Okay, sir. So, ये हमारा टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है. What is the negative or positive face of engineering ethics? Negative phase, as we already talked about it. So we can say like it's already maybe you have mentioned preventive ethics. Basically, negative ethics, we can prevent the things which are going to happen. So we can take precautions, from the bad behaviors and bad practices. So apart from that, we can say like there is a domain is called positive ethics. So we need to develop positive behaviors and positive, policies or positive practices. That so the person need to be aware of those lines. What does it mean by green color line? What does it mean by red color line? What does it mean by yellow color line? So it basically means that they have to maintain a certain type of distance from certain type of equipment. Um, Sir, kindly explain the yellow, green, and red light, if you don't mind. Like in the industry we visited, like in our industrial tour last I think last week. So in every organization, like if it's a red line, you have to be very careful while approaching that equipment. Like you have to maintain a like say 6 to 8 feet clearance needed to be maintained. Whereas for a yellow, where there is a yellow line, you have to maintain a like at least 4 to 5 feet distance from that equipment or for that apparatus. So like there is any green line, you can go like nearer to that equipment, like 2 feet or 2.5 feet is more than enough. So some if you want to touch a certain equipment, you have to wear gloves or glasses, or you have to be careful about the voltage or current rating. That is like if you talk about the certain capacitor, that capacitor is a small component, like just the size of a finger. So when if it's fully charged, if you touch it without any precaution or safety, you can even hurt yourself. So to operate that capacitor or even charge that capacitor, there you have to be careful. You have to wear gloves, or you have to be properly insulated before touching those capacitor or heavy voltage equipment basically. ओके, तो सर हम ये नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी ऑफ इंजीनियरिंग एथिक्स को प्रिवेंटिव एथिक्स भी कह सकते हैं. जी ऑब्वियसली नेगेटिव और पॉजिटिव एथिक्स बेसिकली प्रिवेंटिव एथिक्स से डायरेक्टली रिलेटेड बेसिकली है ही प्रिवेंटिव है. नेगेटिव एथिक्स को अवॉइड करना ऑब्वियसली ये प्रिवेंटिव एथिक्स कह सकते हैं आप. पॉजिटिव एथिक्स को, पॉजिटिव पॉलिसीज है, पॉजिटिव आपका बिहेवियर है, पॉजिटिव आपके फॉलोइंग ऑफ स्टैंडर्ड है, उनको मजीद इम्प्रूव करना, मजीद फॉलो करना ऑब्वियसली वो जो है प्रिवेंटिव एथिक्स का एक पार्ट हो सकता है. जी ओके, ऑलराइट. ओके, तो हमारा जूम सेशन अब यहीं पे खत्म
होगा सर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया और हमारे साथ इतना कोऑपरेट किया। जी जी, नो प्रॉब्लम, एनी टाइम जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच सर। जी, अल्लाह हाफिज।